Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics, and the stock markets. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया के ताजा आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के समाचार, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन स्टूडियो में विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं एस रंगाभाष्यम। Well, the top stories: domestic stock indices witnessed modest gains. Sensex closes near 62,600 points, while Nifty settles above 18,600 level. Rupee appreciates 5 paise against the US dollar, and gold climbs above 54,000 rupees per 10 grams for February contracts at the MCX. घरेलू शेयर बाजारों में हल्की बढ़त। सेंसेक्स 62,600 अंक के नजदीक हुआ बंद। निफ्टी 18,600 के स्तर से ऊपर पहुंचा। रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत, और एमसीएक्स पर फरवरी अनुबंध के सोने का मूल्य बढ़कर 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचा। शुरुआत शेयर बाजार से कर लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में आज हल्की बढ़त दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच सेंसेक्स 62,600 के करीब बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18,600 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 160 अंक बढ़कर 62,571 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 49 अंक की वृद्धि से 18,609 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.43% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.32% की बढ़त में रहे। Well, as Vishal just mentioned, the domestic share markets today witnessed modest gains. Both indices rose amid mixed cues from global share markets. The BSE Sensex closed near 62,600 points, while the Nifty settled above 18,600 level. The Sensex rose 160 points to close at 62,571. The Nifty also added 49 points to close at 18,609. Whereas in the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.43%, while the small-cap index ended up 0.32%. In the Sensex pack, 13 companies posted gains, while 17 logged losses. Axis Bank was the top gainer as it added 2.7%, followed by IndusInd Bank, which surged 2.3%. Larsen & Toubro rose 2.1%, and ICICI Bank added 1%. On the other hand, Sun Pharma declined 3.6% and Power Grid plunged 1.6%. TCS fell close to 1% and NTPC ended 0.8% down. In the sectoral indices at the BSE, 12 sectors gained while 8 logged losses. Capital goods sector gained 1.4%. Industrial and Bankex both rose 1.1% each. Financial sector added 0.7%. On the other hand, healthcare and realty, both indices fell 0.9% each. Utility sector fell 0.7% and power index ended 0.6% down. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,808 companies gained while 1,681 fell. Shares of 130 companies, however, remained unchanged. जी, और अब हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए ऑनलाइन जुड़ गए हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। गोपाल जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि 4 दिन की जो गिरावट चल रही थी, आज थोड़ी सी राहत दिखाई पड़ रही है शेयर बाजार में, कुछ तेजी का हमें एक माहौल दिखा बाजार में।
क्या प्रमुख वजह मानते हैं आज जो बाजार ने थोड़ी सी तेजी दिखाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा उछाल ऊपर की तरफ आया है। उसका एक प्रमुख कारण ये जो मार्केट का है उसमें यही है कि निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है सेंसेक्स वो काफी स्ट्रांग हुआ है और खासकर पीएसयू बैंक अपने ऑल हाई पे इस वक्त हैं। तो जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमी में वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आई है। और कल जो 2-3 दिन जो गिरा उसमें एक प्रमुख कारण था कि आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया उससे, जबकि मार्केट को पॉजिटिव लेना चाहिए क्योंकि आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन मार्केट ने उतना पॉजिटिवली उस चीज को रिएक्ट नहीं किया था। मुझे लगता है कि लेट रियलाइजेशन है कि अगर इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आती है मेजर से तो शॉर्ट टर्म उससे लिक्विडिटी क्रंच होने के बावजूद भी ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। तो मुझे लगता है कि यह एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के रूप में, और आरबीआई ने कॉन्फिडेंस भी दिखाया है कि चैलेंजेस तो हैं इकोनॉमी में, लेकिन कल जो गवर्नर साहब का जो स्टेटमेंट आया था उसमें ये कहा था कि बट इकोनॉमी अपने आप में स्ट्रांग है। पीछे कुछ दिनों पहले आईएमएफ वगैरह का भी रिपोर्ट आई थी जिन्होंने रिवाइज किया था अपर लेवल पे जीडीपी ग्रोथ को। तो अगर एवरेज आप देखेंगे तो सभी जो भी एस्टिमेट्स हैं जीडीपी ग्रोथ के अराउंड 7% के पास है। वो अपने आप में एक हेल्दी ग्रोथ है ग्लोबल रिसेशन को या ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए। Agarwal ji, you spoke about the RBI's outlook on growth. If you see in the last 1-2 days, World Bank has actually revised the growth outlook upwards from 6.7% to 7%, whereas our own Reserve Bank of India has kind of downgraded it. Now they are a bit of a bit pessimistic. What would you say? Why is this divergent kind of a trend? Our own central bank revising the growth downwards. Is it that they know certain aspects of the home truth, which probably the World Bank doesn't know? No, actually, all these are estimates. If you see, the SBI has given another rate, Ministry of Finance has given another estimate, IMF has a different estimate, even credit rating agencies have been giving different estimates, but average you will see that it is 6.7 to 7%. So these are estimates and surveys, etc. That depends upon from where you get data collected, these things. But you have to take an average call on that. It cannot be very specific. If the RBI says 6.8, so it will be around 6.8 or 7. It should be average GDP growth rate for the current year is to hover between 6.8 to 7. It can be anywhere in between. So, and it also has certain impact of the global scenario, some certain war, geopolitical situations, impacts, and even what Fed will take a stand on. So these are the factors. We should take it as an estimate and take an average of all these estimates. जी गोपाल जी, मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद जो नतीजे घोषित किए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, शक्तिकांत दास जी ने, उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ी है और शहरों में भी कंजम्पशन बढ़ रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो इकोनॉमी में ग्रोथ है, अभी पीछे रिपोर्ट भी आई थी, अगर आप वर्ल्ड बैंक की जिस रिपोर्ट को आप बात कर रहे हैं या फिक्की की एक रिपोर्ट भी आप देखेंगे तो फिक्की ने इंडस्ट्रियल सर्वे में बताया कि जो इंडस्ट्री का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 70% है और वो इंक्रीज हुआ है पिछले साल में। तो ये अपने आप में एक हेल्दी साइन है। और अगर 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब हो जाता है अराउंड 70 to 80% के बीच में, तो एक्सपेंशन प्लान होता है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का एक फैक्टर जो प्रोपेल करता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री को, वो है मार्केट डिमांड। और हमारी रूरल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप मार्केट में भी जाएंगे, अभी फेस्टिवल सीजन निकला, अभी मैरिज सीजन अभी चल रहा है आजकल, तो आप किसी भी मार्केट में जाके अगर फिजिकली भी आप देखेंगे तो देयर इज ह्यूज फुटफॉल
बहुत रश है उन मार्केट्स में। तो लगता है कि आफ्टर पेंडेमिक, मैं कुछ मार्केट्स में यहाँ गया, चांदनी चौक, करोल बाग वगैरह में मैंने देखा, तो मैंने पूछा कि ये इतना ज्यादा रश और इतना डिमांड क्यों? तो उन्होंने बोला कि लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे इवेंट्स जो थे, सेलिब्रेशंस थे, वो रुके हुए थे लोगों ने, अब वो एकदम खुल गए, नॉर्मल लाइफ में आ गए। तो प्री पेंडेमिक लेवल पे हमारे देश में एक्टिविटी आ गई है, और वो रूरल इकोनॉमी भी और इसमें अर्बन इकोनॉमी में भी डिमांड क्रिएट हो रही है। तो फिक्की की भी रिपोर्ट यही कहती है। और अब क्या होता है, ये कैटलाइज करती है ये चीजें, वन थिंग लीड्स टू अनदर। अब राइट, रूरल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ी तो फिर इन्वेस्टमेंट आया तो उससे फर्दर डिमांड बढ़ी। ऐसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रांग है। अभी 235 प्रोजेक्ट गति शक्ति में आइडेंटिफाई किए सरकार ने, जो फोकस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, उससे भी मल्टीपल इम्पैक्ट होगा। Right. Agarwal ji, we are talking about the monetary policy. If you see in the last 6 months, the rate hike has been to the tune of 2.25%. That is 225 basis points. Transmission of interest rates has always been a tricky issue, and it doesn't percolate in the same proportion. Can we expect, at least in the coming couple of months, the hike would actually percolate down and would impact all these, interest rate sensitive sectors? Ultimately, many of the industries' interests are dependent upon the repo rate and reverse repo rate, and they are automatically incorporated. Even home loans also have a benchmark to the prime repo rate, prime lending rate, etc. So it will automatically have impact. What is to be seen, that will the banks increase its deposit rates also? That is one issue which the banks must see, because if I see the banking sector is performing very well and it is at the all-time high, there is a huge margin between lending and the borrowing cost of the bank. So I think now banks should streamline that difference gap and should increase the deposit rate so that savings also get higher interest rate. I think this is the immediate expectation that the depositors of the country or the fixed income investors have in mind. Yeah. And Agarwal ji, coming back to the stock market per se, despite all the headwinds and the global scenario, everyone is talking about a clear-cut slowdown, if not a recession, across the globe, except India. So even in these circumstances, our domestic stock markets seem to be really, gung-ho and kind of upbeat. It is maintaining around or at least around this level of Sensex, 62,000, and the Nifty at around, 18,500. But the thing is that market Sensex is not directly, you cannot link it to the economic parameter, economic activity directly. Okay. Liquidity also. But it's always been known as a barometer of the economy, isn't it? Yeah, but it is not directly related, because the market index, etc., move because of the liquidity also. There is huge fund flow in the Indian market, though it is a positive sentiment for the Indian economy that the global players have, and it drives that. But ultimately, overall outlook for Indian economy is very positive, and therefore foreign investors are investing. And if you see now in February, UP is one of the important area where economic activity will be driving the Indian economy. And Yogi ji, UP government is holding a investor summit in February, and they have a very huge target set for themselves of investment project investment expectation of 10 lakh crore. That's a huge investment. And that's quite ambitious. So automatically the whole economy will be driven, and all these expectations are driving liquidity plus better economic outlook for India in comparison to global economy, and positive sentiment about the
support of the government to investment activity in the country, particularly manufacturing, defense, automobile. These all are combinedly showing in the increased index rate. जी, मौजूदा जो वर्तमान परिस्थितियां हैं अर्थव्यवस्था की, और उसमें आप देखते हुए गोपाल जी, हम यही जानना चाहेंगे कि निवेश के लिहाज से कौन से सेक्टर अब आकर्षक हैं जिनमें कि निवेश किया जा सकता है? देखिए, सेक्टर बेसिकली वो है जिसमें हम ग्लोबल और सप्लाई चेन से हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिंक हुई है। तो अगर आप देखें, जो सेक्टर अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन शिपिंग इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म करने का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे शिपिंग इंडस्ट्री में बॉटलनेक कुछ यूरोपियन कंट्रीज की पॉलिसीज के कारण हो रहा। तो शिप्स एंड कंटेनर्स एक्सेट्रा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये सेक्टर में एक बॉटलनेक सा कहीं आ रहा है, तो ये इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी। और वैक्सीन की अगर भारत की कैपेसिटी देखें तो ग्लोबल लेवल पे हमारी टॉप में इस वक्त है। मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हमारे लिए अच्छी है। और फिर एक प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि हमारा एरोस्पेस, जबकि उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, लेकिन एरोस्पेस वगैरह में मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सेक्टर है। और एक सरकार ने बहुत बड़ा पीएलआई इन्वेस्टमेंट किया ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में जी, क्योंकि चाइना की कुछ पॉलिसीज के कारण, ताइवान के रेस्ट्रिक्शंस के कारण, ये जो बॉटलनेक ऑटोमोबाइल और हार्डवेयर में आया था चिप्स के कारण, तो सरकार ने उस बॉटलनेक्स को खत्म करने के लिए 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया था ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में, जो कंप्यूटर हार्डवेयर ऑटोमोबाइल में यूज होता है। तो वो सेक्टर भी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा। तो कई पीएलआई जिनमें सरकार ने 13 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जिसमें ह्यूज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव सरकार ने अनाउंस किए हैं, लगभग 4 लाख करोड़ के। जी गोपाल जी, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे और एक खबर ले लेते हैं। खबर से पहले हम आपको लिए चलते हैं ब्रेक पर। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। ब्रेक के बाद कार्यक्रम मार्केट मंच में आप सभी श्रोताओं का फिर स्वागत। रुक करते हैं रुपए के प्रदर्शन की ओर। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 43 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स बढ़त के साथ 105.29 पर कारोबार कर रहा था। और अब खबर जुड़ी हुई है स्टार्टअप से। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज लोकसभा में बताया कि देश में स्टार्टअप्स के जरिए 8,40,000 से अधिक रोजगार जुटाए गए हैं। रोजगार के ये अवसर 84,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में उपलब्ध कराए गए। श्री राणे ने बताया कि ये स्टार्टअप्स देश के 640 जिलों में चलाए जा रहे हैं। इनमें से 45% स्टार्टअप 2 टियर और 3 टियर नगरों में हैं। एमएसएमई मंत्री ने बताया कि 100 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा मिल चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि स्टार्टअप्स के मामले में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। And in related news, the registration of women-owned micro, small and medium enterprises has increased by more than 86% during the last financial year. The number of registrations was 4,89,470 by the end of financial year 2021, which increased to 9,10,973 in the financial year ending 2022. This was stated by the Union MSME Minister Narayan Rane in a written reply in the Lok Sabha today. Agarwal ji, as far as new job creations, especially in the micro, small and medium enterprises and including startups is concerned, this is really encouraging, isn't it?
Definitely, because the thing is that ultimately, if you see the global scenario, the employment generation comes from manufacturing sector, and that too from the MSME sector. Even if you look into the advanced economies, you will find that majority of employment generation is from MSME sector, because the multiplier effect of the labor in MSME sector is higher than large industries, etc. So large industries will definitely help GDP growth, but employment generation mostly comes from self-entrepreneurship, cottage industries, and MSME sector. So our government focus has been that we should start and propel cottage industries, value addition at the agriculture sector, and therefore FPO have been, farmer producer organizations have been encouraged. And you see, our Minister for Cooperation, Mr. Amit Shah, has said that we have a huge potential in the cooperative sector. It generates huge employment. So there is a specific focus on development and working ease for the cooperative sector, which will create large employment in the rural economy. And therefore, you'll see that our rural economy, because of handicraft, one district, one product, MSME sector, cottage industries, farmer producer organization, value addition at the farm level, all these will help the employment generation. Agarwalji, I want to put this question also. Although the government has come up with a number of concessions for the micro and small industries, also for startups. The government itself is a mammoth procurer, and it purchases in crores of rupees, and all these small units at times end up not able to participate in the tenders because of, say, the earnest money deposits or any other clause for a long experience. Do you think there is still scope there to kind of give more relaxations so that they can compete with already established companies? The government has on the past come out with GEM, Government E-Market Initiative. Where this small industries, small business traders, manufacturers have been encouraged to register there. There is no tendering process. And the government is putting more and more departments and asking PSUs to purchase through the GEM portal. I just give you one example. Only this railways annually purchases around 40,000 crores of small products. And the ministry has asked all its procurement to be enlisted on the GEM portal, and anybody can participate. So through the GEM portal, there is no tendering process, one thing, and that is a good option for small business to get themselves registered on Government E-Market portal and then supply to large PSUs. Even 500 more companies having turnover more than 500 crores have to register themselves on the GEM portal for their procurement. Area which will help them without participating in government procurement without tendering and in a open, transparent manner. Second thing is, government has reserved tenders less than 200 crores only for domestic procurement. So tender below the value of 200 crores have been reserved for domestic manufacturers, and that is another important aspect that will help. Gopal ji. This open network which the government is promoting for e-commerce platforms, so that they can be transparently competitive. Then they have certain reservation about international e-commerce platform that they are not giving level playing field to small producers. So government has started an initiative of open network company where anybody can participate. अब बात कर लेते हैं वैश्विक शेयर बाजारों की।
वैश्विक शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। हांगकांग के हैंग सेंग में 4.4% का उछाल आया और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% की बढ़त में रहा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। जापान का निकेई 0.4% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% के नुकसान के साथ बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्देशीय कारोबार के दौरान नुकसान में चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का कैक दोनों 0.1%, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। Let's go across the Atlantic to the American markets. The S&P 500 and Nasdaq closed down yesterday after a volatile session. US stocks fell as investors awaited for cues from the upcoming Federal Reserve's monetary policy meeting. The Dow Jones Industrial Average ended flat. The S&P 500 fell 0.2% and the Nasdaq Composite Index declined 0.5%. And now let's go across to the energy sector and take a look at it. Oil today rebounded after 4 sessions of decline. The crude prices boosted by hopes that easing anti-COVID measures in China will revive demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $77.90 per barrel, while WTI crude prices were at $73.25 per barrel. Agarwal ji, coming back to the US markets and also to talk about the Federal Reserve, what can we expect in the upcoming monetary policy review of the Federal Reserve? People are expecting the Federal Reserve, which had been continuously increasing interest rates, is at its peak, because ultimately increasing interest rate has a limitation on how much inflation it can control. US has been reeling under very high inflation, and European countries are also facing inflation and recession. So if you look into interest rate and only see the aspect of increasing interest rate to fight inflation, then it becomes counterproductive, that it will also propel recession, because liquidity in the market is sucked down and industrial interest rate also increases, so it becomes costlier for the industry to borrow. So I think they have now peaked up, and general expectation is that the US will not hike any more, because it has to balance between recession and inflation. बात कर लेते हैं कीमती धातुओं की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी अनुबंध के सोने का वायदा भाव आज 70 रुपए बढ़कर 54,055 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च सौदों वाली चांदी भी 215 रुपए की मजबूती से 66,480 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,796.60 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। गोपाल जी, बहुत ही संक्षेप में आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि सोना अब 54,055 रुपए प्रति 10 ग्राम, क्या अब ये हम सोने में और बढ़त का रुख देखेंगे अभी आगे भी? नहीं, देखें, ये वाला जो सीजन होता है ये मैरिज के लिए है, तो इंडिया में वो इंक्रीज डिमांड हो जाती है गोल्ड की, और तो मुझे और कमोडिटी प्राइसेस जनरल ग्लोबली स्ट्रेंथन हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बहुत जगहों पे रिसेशन की स्थिति है ग्लोबल कंट्रीज में, तो मुझे नहीं लगता कि और कमोडिटीज में और उछाल आएगा। जी, गोपाल जी, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories that we are following for you this evening. Domestic stock indices witnessed modest gains. Sensex closes near 62,600 points. Nifty settles above 18,600 level. Rupee appreciates 5 paisa against the US dollar, and gold climbs above 54,000 rupees per 10 grams for February contract at the MCX. घरेलू शेयर बाजारों में हल्की बढ़त। सेंसेक्स 62,600 के नजदीक हुआ बंद। निफ्टी 18,600 के स्तर से ऊपर पहुंचा। रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत, और एमसीएक्स पर फरवरी अनुबंध के सोने का मूल्य बढ़कर 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचा। Well, that's it in this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. नमस्कार। Market Mantra.